वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं, जिसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, ट्यूटलेज। ट्यूटलेज शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी की देख रेख के अंदर काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के अंतर्गत आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किसी के अंदर किसी के संरक्षण में आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस नाउन ट्यूटलेज का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ होता है इंस्ट्रक्शन स्पेशली ऑफ एन इंडिविजुअल, द स्टेट ऑफ बीइंग अंडर अ गार्डियन और अ ट्यूटर। जब आप किसी के संरक्षण में, किसी के देख रेख में कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति के लिए हम लोग ट्यूटलेज शब्द का प्रयोग करेंगे। सो द इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और ट्यूटरिंग। तभी हम लोग जब थैंक यू नोट्स भी लिखते हैं टीचर्स को, तो हम लिखते हैं we learned these things under your tutelage, under your astute tutelage, my manager, we learned these things. So tutelage किसी के देख रेख या किसी के संरक्षण के अंदर जो कार्य करा जाता है या सीखा जाता है, उसके लिए नाउन का प्रयोग होता है। Let's look at the usage. The company is relying on the tutelage of its new CEO to increase profits. That means company rely कर रही है for the instruction or the guardianship या किसी के नए CEO के संरक्षण के अंतर्गत। She is the governess overseeing the tutelage of the family's children. So tutelage. Moving on to the next word, capitulate. Capitulate शब्द का अर्थ होता है सरेंडर कर देना। जब आप किसी चीज़ के लिए सरेंडर कर देते हैं, झुक जाते हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हम कैपिटुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस वर्ब का अर्थ होता है जब आप सरेंडर कर रहे हैं, when you surrender often after negotiation of terms to give in to something। जब आप सकम कर जाते हैं, when you are succumbing, when you are relenting, when you are surrendering or yielding, that is when we use the word capitulate। इस वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है। संधि कर लेना, तभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पार्ले भी देखा है, that's a discussion or a negotiation between enemies। and capitulate का भी अर्थ होता है सरेंडर कर देना after you've come to the terms of negotiation. Let's look at the usage. If your parents refuse to raise your allowance, you might have to try to argue until they capitulate, until they succumb, until they surrender. The enemy was forced to capitulate unconditionally. The company capitulated to the labor union to avoid a strike. So capitulate कर देना when you're surrendering, succumbing or relenting to someone. That is capitulate. Moving on to the next word, pedantic. Pedantic शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा fastidious हैं, you are very particular about details, आप एक perfectionist हैं, you are very finicky, रूढ़िवादी हैं आप, उसके लिए हम इस adjective का प्रयोग करते हैं। So someone who is very worried about details or formal rules, rules और details के लिए कोई person बहुत worried होता है, that is when we are using the adjective pedantic. Someone who is excessively concerned with minor details or rules, someone who's precise, a perfectionist, fastidious है, finicky है, उनके लिए we are going to be using the adjective pedantic. So here, as you can see in the image, this is a caricature. You're fired, you pedant. Dismissed is the preferred term. So he's being very particular even in his dismissal. Let's look at the usage. When the teacher corrected my daughter's term paper with red marks, covered my daughter's term paper with red marks, I felt that she was being way too pedantic in her review. Excessively particular in her review. I have language skills. I am pedantic to stupendous heights, stupendous great heights, and a computer literate person. So pedantic, excessively following, looking at details, रूढ़िवादी कोई व्यक्ति है, उसके लिए हम pedantic शब्द का प्रयोग करते हैं। Moving on to the next word, puerile. Puerile adjective का अर्थ होता है juvenile, childish, silly, बहुत बचकाना, अगर बचकानी हरकतें कर रहे हैं, उसके लिए हम puerile शब्द का प्रयोग करते हैं। So something that is juvenile, childish, silly, that is when we'll be using the adjective
प्यूराइल, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं चाइल्डिश, बॉब इज अ प्यूराइल 40-year-old मैन, सो दैट मीन्स बहुत ही बचकानी हरकतें करते हैं, तभी प्यूराइल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है. लेट्स लुक एट द यूसेज. द फायरमैन वाज स्कोल्डेड फॉर प्लेइंग प्यूराइल प्रैंक्स ऑन हिज co-workers. So बचकानी हरकतें करना, as you can see over here in the image, is the correct meaning of the adjective puerile. Moving on to the next word, raconteur. raconteur शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको कहानियाँ सुनाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो सके. सो एनीवन जो आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से कहानियाँ सुनाते हैं, उसके लिए वी आर गोना बी यूजिंग द नाउन raconteur. raconteur, as you can see over here in the image also, he is narrating stories in a very admirable way. So one who is good at telling story in an interesting way. A person who is excelling in telling anecdotes, short stories, right? So uske liye we're going to be using the noun raconteur. Let's look at the usage. Raconteurs are gifted storytellers who are able to spin amusing tales from everyday life. Spinning amusing tales, that means they're able to weave, they're able to make, they're able to create amazing tales. उसके लिए हम noun raconteur शब्द का प्रयोग करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो कहानियाँ बहुत interesting way में बता सके. Moving on to the next word, profligate. Profligate शब्द का अर्थ होता है someone who's very extravagant, indulgent, बहुत पैसा खर्च करते हैं, या licentious है. Licentious that means कि बहुत ही dissolute lifestyle है उनका, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, licentious है. Recklessly wasting your money. Someone who is also considered to be licentious का अर्थ हो जाता है एक चरित्रहीन मनुष्य, एक a person who's given to wildly extravagant, self-indulgent expenditure, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं. So इसके लिए wasteful, spendthrift, extravagant, prodigal, ये important synonyms है, और antonyms है thrifty and frugal. Let's look at the usage. During the mayor's campaign, he swore to put an end to profligate government spending. So profligate के दो अर्थ हैं, एक तो excessively spending और दूसरा है licentious, that is चरित्रहीन होना. So both are the correct meanings of the word profligate. Let's look at another example. Profligate behavior is a lot of fun, but you will regret it later when you get your credit card bill. So extravagantly आप जब पैसे का use कर रहे हैं, that's profligate. Moving on to the next word, jostle. Jostle verb का अर्थ होता है जब आप किसी को elbow मार के push कर रहे हैं, जब आप किसी को हटा रहे हैं, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं. और दूसरा होता है when you're trying to struggle for something, जब आप compete कर रहे होते हैं या struggle कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, that is when we use the verb jostle. So exact meaning हो जाता है धक्का देना, when you're making your own way by pushing or shoving someone, और दूसरा होता है when you're trying to compete your way, when you're struggling for something. Let's look at the usage. In the cafeteria, the students rush through the lines and jostle to get the best tables near the windows. Even though the company president has not retired yet, the vice presidents have already started jostling for his position. So jostle karna when you're trying to struggle for something or when you push someone to get that particular place. Moving now on to a quiz. हम लोग पहले कुछ one word substitutions को cover करेंगे, followed by the quiz of the day that we had at the beginning. You can pause the video and try to solve them. The custom of having more than one husband at the same time. More than one husband at the same time is called polyandry. So polyandry is the correct answer, as you can see over here in the image. Whenever a woman is having more than one husband at the same time, that is considered to be polyandry. An extremely deep crack or an opening in the ground. ये extremely deep crack या opening जब आ जाती है ground में, उसे हम chasm कहते हैं. So chasm becomes the correct answer here. List of headings of the business to be transacted at a meeting. That is called an agenda. जब आप क्या क्या करेंगे उस particular meeting में, उस meeting का agenda क्या होता है? So agenda is the correct answer here. A process involving
too much official formality, as you can see over here in the image also, जब बहुत ज़्यादा official delays और official formalities आ जाती हैं उसके लिए हम red tapeism शब्द का प्रयोग करते हैं. That is called a lot of delay. As you can see over here also, India must respond to minimize red tapeism and rampant corruption to pave way for doing business in India with ease. So process जहाँ पर बहुत ज़्यादा official formality है, that is red tapeism. A post without remuneration, जब आपको salary नहीं दी जाती है, that is called honorary. Sinecure is of course a post जहाँ पर आपको बहुत ही comfortable job दी जाती है, that is sinecure or sinecure. Honorary is a post without any salary or without any remuneration. Large scale departure of people, as you can see over here in the image, is called exodus. Exodus is the massive departure of people. Moving on now to the quiz of the day quickly. Liberal शब्द का अर्थ होता है someone who's tolerant, someone who's broad-minded. So tolerant है, broad-minded है, उसके लिए हम liberal शब्द का प्रयोग करेंगे. Microcosm का अर्थ होता है a small system that is representing a larger system, एक small world. So एक small system that is representing a larger system is a microcosm. Obviate, to make unnecessary or to anticipate and prevent, that is called obviate. So obviate is to make unnecessary or to anticipate and prevent something. Paucity is shortage, जब किसी की shortage हो जाती है या scarcity हो जाती है उसके लिए हम paucity शब्द का प्रयोग करते हैं. Posure, a person who is habitually pretending, जब कोई व्यक्ति pretend करता है that he is not, that is called posure. So someone who is trying to affect an attitude or identity to impress others. आप affect कर रहे हैं, you're pretending, you're not that but you're trying to pretend. Remonstrate is to object or to protest. When you're objecting or protesting, that is remonstrate. Skeptical, एक ऐसा person who cannot be easily convinced, जिसे आप convince नहीं कर सकते easily, he or she is having doubts or reservations. Vicarious is when you're experiencing it second hand. जैसे अगर हम YouTube के ऊपर कोई travel place के बारे में देख रहे हैं, so we are vicariously experiencing it. We are not there, but there is an indirect experience. So whenever we are trying to experience something in an indirect way, that is so indirect, experienced in imagination, that is vicarious. Want का अर्थ होता है when you're bragging, when you're boosting, आप शेखी मार रहे हैं, that is want. Indefatigable, as we've already seen in the previous videos, and the only answer left, someone who's tireless, someone who's persistingly tireless, unrelenting, unke liye we are going to be using indefatigable. So here you can look at the answers in the cheat sheet and cross check them. In case of any doubts, you can mention that in the comment section.